वो आतंकवादी आ गए तो हम भागे और छुपे. आतंकवादी ने ढूंढ लिया. हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे. एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस. और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी. You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that. मुझे अदनान जी से ये पूछना है कि आपकी हुकूमत के जो लोग हैं वो भी ये बात कहते हैं कि दहशतगर्द के आप भी शिकार हुए हैं. आपने फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर की कहानी तो सुनी होगी. In fact, imagine me, a company with around 200 boys, trying to operate and dominate an area which is almost 30 kilometers by 30 kilometers. There is no cultural invasion. We're all Indians at the end of it. This is a story which I think requires a certain amount of depth. It requires a certain amount of clarity of thought, which is why I think that it's important that we all come together. May I just request any of you who may have friends in Pakistan, if we can reach out to people in Pakistan, I don't see why we shouldn't reach out to them. Just like what we're seeing here in India, where people are coming out in large numbers, whether it's in Kashmir or wherever. People are coming out in large numbers to express solidarity with India, and I think that's the most important part. That if you can express your solidarity with India at this stage and say that you don't belong to the kind of nexus which is being spoken about, then I think it will go a long way. It's been a rather tumultuous evening where a lot of action has been unfolding over the last hour or so. There was a Cabinet Committee on Security meeting which is organized, and in that Cabinet Committee for Security meeting, it was decided that India is going to come down really hard against Pakistan, and as it should. I think there's absolutely no reason why Pakistan must not be made to pay a price if we are convinced that indeed it is Pakistan which is responsible for these terrorist strikes. Now, if you go on our digital platform, the squirrels.in, you will see that we've done a lot of interviews. It's easy to create and follow a templatized architecture of a response. Very easy for me, or for that matter, anyone, to say that, okay, terror strike has happened. All right, step 2, Pakistan is responsible. Let's go straight up and let's blast out Pakistan. And that's why I have put this question right now. Can we really blast out the terror capital? If we know that indeed Pakistan is responsible for this, then I have a simple question. What does it take? What does it take for us to blast out the terror capital? Why not think in terms of taking such a decisive step that it becomes a precedent of sorts for a very, very long time to come? That's what I think needs to be done, because otherwise what can happen on stories like these is that you may just end up beating about the bush, and you may just end up basically following a predictable pattern. So, question number 1, what is it that we really want to do? Everybody's saying, take revenge. And I've been asking this question since the morning today. Revenge against whom? Please tell me. Who is the entity who is going to take revenge? There are 34 people right now on this broadcast. And can I tell you how many people are watching an IPL match right now? Just imagine. Here, all of us are outraging, and here, all of us are saying, oh God, what the hell has happened, and what do we do to take revenge? What do we do, to satisfy ourselves? And here, there is a section of our country. 19 crore people are watching. That's what is being suggested to me.
Now, I must admit, I'm not too much of an IPL watcher. As much as I love cricket, IPL is not something which has attracted me. But to be watching this game on a day at a time when so many events across the country have been cancelled, and for you to be told that the only thing that has been done is for the commentators to wear a black band, for players to wear a black band. That is why That is why I think our entire approach to dealing with terror appears, so out of place. Pulkit, thanks for your thumbs up, and I'd love to hear your thoughts on this, Pulkit. So I'm going to extend an invite to you to be there on the mic as well in a short while from now. Somebody just sent me this, and I was just googling it, and I'm actually seeing that in this last few seconds that I said that 19 crore people were watching an IPL match and 83 people are on this space where we're trying to demand some action, some accountability. The number of people watching IPL has, by the way, grown up to 19.1 crore. Now that's a reality. Yeah. That's a reality. Yeah. What do you make out of this, Pulkit? Yeah, well, I think that, Indian people, they have lost their rage about core issues and what really matters in country ever since 2014, I think, because that was the last time I've seen country coming together for real issues. What happened in country back then, 26/11 happened, and the kind of sentiment that was throughout the country during that time. I know that I was a kid back then, but I still remember everybody was raging and everybody was holding the government accountable, all the officials accountable. So I don't see that anymore on the TV as well. I see the media. They are trying to cheer a certain party, and they're trying to kind of like damage control instead of holding the government accountable and demanding a solid action against terrorism. Because I think what this country needs is, like you just said, that 19 crore people are watching the IPL just in a day or two. So I think because so many cushions have been brought down, and the celebrities, they don't speak their mind like they used to. So what are you saying? Basically, everybody's become very self-centered, very selfish, so beyond a point it doesn't matter. Exactly. It's like 2 days of rage and that's it. Nobody cares. Yeah. I'm going to do my stuff. It's the government's job to handle the stuff. So there's not much pressure groups. Like back in the days when the social media was not that prevalent, there were so many pressure groups. They would put pressure on the government to take solid actions, and they did. But I hardly see that now. It's some. So now the groups are divided. Certain group is cheering for this. It's not a collective action. Like we are not coming together as one nation. Yeah. But I was only making this point that in the morning, we're seeking quest for justice, and in the evening, people are going to watch a match at a cricket stadium. Exactly. But my point is, why should you not cancel the cricket match? Who organized the IPL? Who are these organizers? Exactly. Yeah, exactly. Because is it not that people at the right at the top of the helm in the BJP at the center? Jay Shah is the ICC president. He's the BCCI president. Why should questions not be raised? Yeah, that's my point. Yeah, exactly. Like one match, how much that's going to cost you? You're always going to make money, but read the room, read the mood of the nation, right? And this will send a clear message that people needs to, they need to connect with the sentiment of what's going on in the nation and what really matters. So, yeah, I totally agree on that, what you just said. Okay, just be with me because, there's someone whom I don't know, I must admit. There's someone called Mohammad Adnan Khan. Now, Mohammad Adnan Khan's profile reads that he's from Karachi. And if indeed he's from Karachi, I'd like to know, what he's thinking. Mohammad, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, जरा बताएं मोहम्मद जी, यहाँ पे भारत में बहुत गुस्सा है लोगों के मन में. सबको लगता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, पाकिस्तान ने भारतीयों की जान ली है. क्या आप पाकिस्तान में हैं मोहम्मद जी? आप किधर हैं? जी मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान में ही रहता हूँ. अच्छा, तो मोहम्मद भाई जरा आप बताएं जरा कि ये क्या माजरा क्या है? भारत को पूरा विश्वास है, भारत के पास एविडेंस है कि पाकिस्तान बैक टेररिस्ट ने कश्मीर में आतंकवादी घटना की. मैं जानना चाहता हूं, जैसे भारत की देखिए सड़कों पर एक आम राय है और एक कन्विक्शन है. क्या पाकिस्तान में ऐसे लोग नहीं है जिनको लगता है कि उनकी सरकार या उनकी आर्मी चीफ जो है ये ISI गलत काम कर रहे हैं?
سب سے پہلے تو بہت یہ میں نے ویژولز دیکھے ہیں اور جو ہوا ہے یہ میں اس کو اسٹرانگسٹ ورڈ میں کنڈیم کرتا ہوں. بہت غلط ہوا ہے. میرا بھی دل دکھا ہے دیکھ کے کہ یہ لوگ بیچارے انجوائے کر رہے تھے ایک اچھی جگہ پہ خوش ہو رہے تھے اور اس طرح ان کو بے دردی سے مارا گیا. یہ تو بہت غلط بات ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں جنہوں نے بھی یہ کیا ہے ان کا ریلیجن اور نیشنلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. دے آر ڈاگس, دے شوڈ بی ٹریٹڈ لائک میڈ ڈاگس. نمبر 1, ان کو جو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو جو مار رہے ہیں, ان کو جو بھیج رہے ہیں, ان سب کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے, بھلے وہ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے سر. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس فیکٹ کہ پاکستانی بھی اسی قسم کے ٹیررزم کا شکار ہو گئے ہیں ٹائم اینڈ آؤٹ, اینڈ وی آر سک اینڈ ٹائرڈ آف دس. ٹھیک ہے. اب اگر ایک نیشنل فیوری ہے, لوگوں کو غصہ ہے, اور جتنا غصہ مجھے پاکستانی ہوتے ہوئے بھی اس بات پہ غصہ ہے کہ کیا ہوا ہے, اور جو ویژولز دیکھے ہیں وہ جو نیوی کے کیپٹن صاحب تھے ان کے ساتھ جو ان کی وائف بیٹھی ہوئی ہے, دیٹ واز ہارٹ بریکنگ. اور میں پورے انڈین نیشنز کے ساتھ اس کی سینٹیمنٹس کے بالکل ساتھ ہوں. غصہ ہے اور ہونا چاہیے, لیکن ہم بھی سیکنڈ ٹائرڈ ہیں اس چیز سے. اور لیکن ایک بات بتائیے محمد جی, جو کہ آپ بھی سیکنڈ ٹائرڈ ہیں, جان و مال آپ کے دیش میں جا رہا ہے, جان و مال ہمارے دیش میں جا رہا ہے, تو یہ کون لوگ ہیں؟ مطلب یہ وہ لوگ ہیں اتنا ایویڈنس دیا گیا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے محمد بھائی, اگر آپ میرے اسپیس میں آئے ہیں تو آپ مجھے جانتے ہوں گے. دیکھیے, آئی ایم ناٹ اے رائٹ ونگ اینکر, آئی ایم اے ویری سینسیبل پرسن. سرجیت, آئی نو یو وانٹ ٹو کم ان اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو ہیو این آنیسٹ ڈائلاگ. اور میں نے دیکھا آپ کے پروفائل پہ کہ آپ کراچی سے ہیں, تو میں جاننا چاہتا ہوں یہ کہ دیکھیے صاحب, میرے بھی پاکستان میں بڑے متر ہیں, میں پاکستان میں 1-2 بار میں بھی ہو کے آیا ہوں. میں یہ ماننا چاہتا ہوں that citizens of Pakistan are also against terror as much as I and citizens of my country are against terror. I want to know from you, how do you respond when someone like your army chief, who also happens to be a former ISI chief, جب جنرل منیر یہ کہتے ہیں کہ صاحب 2 نیشن تھیوری ہے, ہمارے لوگوں کو بھولنا نہیں چاہیے, ہم ہندوؤں سے الگ ہیں اور وہ الگ ہیں, اور ہم نے کشمیری بھائیوں کو کبھی ہم ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. کیا یہ جو ویو ہے, کیا اس ویو کو لے کے کیا پاکستان کی جو عوام ہے وہ پاکستان کے ستا پکش کے ساتھ ہے کیا؟ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. ہم لوگوں کو بچپن سے یہ سکھا کے بڑا کیا گیا ہے کہ وہ گانا نہیں ہے, میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن. ہم بڈھے ہوتے جا رہے ہیں, ابھی تک وطن نہیں آیا. بھائی کیا کرنا ہے؟ یہ ایک پروپیگینڈا ہے سر, جو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے, اور وہ لوگوں کو ہمیں بچپن سے یہ پروپیگینڈا سکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو اس سے چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ہم چھوٹے ہوتے تھے, ہمیں ٹریننگ یہ دی گئی تھی اور یہ فیڈ کر دیا گیا تھا کہ میں سمجھتا تھا جس دن میں کسی انڈین سے ملوں گا وہ بولے گا جے بجرنگ بلی اور مارنا شروع کر دے گا مجھے. ٹھیک ہے. زندگی میں جب پہلی دفعہ کسی انڈین سے ملاقات ہوئی, میں نے بولا یار یہ تو میرے پڑوس میں جو انکل رہتے ہیں ویسا آدمی ہے, یہ تو میرے جیسا ہے, اس کو کیوں ماروں گا میں, یا یہ مجھے کیوں مارے گا, یہ تو کوئی بھی تو محبت کرنے والا آدمی ہے. اب سر پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ دیر از اے کلاس, دیر از اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ وچ ایگزسٹ, اور اس کو فائدہ ہوتا ہے اس انارکی سے, اس اینوموسٹی سے, اور اس طرح کی حرکتوں سے. آپ اس اسٹیٹ کو کچھ بھی بول رہے ہیں, دیر از این اینٹی, ایک راکشس جیسی کوئی چیز ہے جس نے سب کو کنٹرول کیا ہوا. ہمارا بھی سسٹم کنٹرول کیا ہوا اس نے سارا. ٹھیک ہے. اور وی آر ٹوٹلی اگینسٹ اٹ. ہم لوگوں کے اوپر خود ان کے پالے ہوئے لوگ آتے ہیں, یہ جو راکشس ہے نا, آپ لوگ اس کو کچھ اور نام دیتے ہیں, ہم اس کو کچھ اور نام دیتے ہیں. یہ لیٹس کال اٹ دا بیڈ پیپل. سسٹم ہے, پیرالل سسٹم چل رہا ہے. اب اس پیرالل سسٹم کو ختم کرنا ہے, ہم لوگ بھی اندر سے ٹرائی کر رہے ہیں, اور جو بھی اس کو پیرالل سسٹم کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا, وی آر ود دیم. دیٹس اٹ. پاکستانی عوام کی میں آپ کو 90% یہ بتا رہا ہوں, جو 10% ایکسٹریمسٹ ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, انہوں نے کبھی نہ سننا ہے نہ کبھی ماننا ہے یہ بات. Interesting. Sujit Das Gupta ہمارے ساتھی ہیں. He's also here. Sujit, what an interesting view coming from someone who comes from Karachi. That ہاں نہیں, مجھے عدنان جی سے یہ پوچھنا ہے
کہ آپ کی حکومت کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ دہشت گرد کے آپ بھی شکار ہوئے ہیں. آپ نے فرینکنسٹائنز مانسٹر کی کہانی تو سنی ہوگی. ایک ڈاکٹر ہوا کرتا تھا، اس نے ایک مردے میں جان ڈالنے کی کوشش کی اور وہ مردہ جو راکشس بنا تو اسی پر حملہ کر دیا اس نے. تو یہ تو ہونا ہی تھا. اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. اب لیکن اس میں تھوڑی سی ایک بات ایڈ آتا ہے. آپ نے ایک جملہ بولا کہ آپ کی حکومت. سر حکومت ہماری ہے ہی نہیں اور نہ کبھی تھی. ہماری چوزن حکومت کبھی بھی نہیں تھی. ہمارے لیے کسی نے چوز کی اور جس نے چوز کی اسی نے یہ فرینکنسٹائن مانسٹر بنایا اور فرینکنسٹائن مانسٹر ہم پہ ہی بھاری پڑ گیا. دیٹ از رائٹ. وی کریٹڈ سم تھنگ فار somebody else to be used in somebody else's war. اور وہی چیز اب ہمارے گلے پڑ گئی ہے. ہمارے بھی چلے آپ کے پاس یہ ہوا ہے کہ 26 بے گناہ لوگوں کو مارا گیا ہے. سر ہمارے یہاں تو ہر مہینے ہنڈریڈز میں ہوتا ہے یہ نمبرز. ہم لوگ بھی انہی کے ساتھ مر رہے ہیں اور ان کے ایسے زومبیز ہیں جو بات بھی نہیں سمجھتے, جو پیار بھی نہیں سمجھتے, جو مارو تو اور اسٹرانگ ہوتے رہتے ہیں. تو مار رہے ہیں اسٹرانگ ہو رہے ہیں. ہمارے بھی لوگ مر رہے ہیں. جی اسی کے متعلق میرے دو سوال اور ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس میں پاکستان کی عوام شامل نہیں ہے, یہ حکومت کے لوگ ہیں یا تو ISI کے لوگ ہوں گے یا پھر آرمی کے لوگ ہوں گے. یہاں پر فی الحال ایک ایسی سوچ ہے کہ جب بھی یہاں ایسی کوئی گھٹنا گھٹتی ہے بھارت میں تو ہم جب بدلہ لیتے ہیں, مان لیجئے چاہے یہاں پر جو بات کی جاتی ہے کہ اری میں جب حملہ ہوا تو سرجیکل سٹرائک ہوا, جب پلوامہ میں ہنگامہ ہوا حملہ ہوا CRPF کے جوانوں پر تو بالاکوٹ میں ایئر سٹرائک ہوا. لیکن جب بھی ہم اس طرح سے ایک طرح سے ہم کتھت طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بدلہ لیا, اس سے جو اس کے پیچھے جو کارکن ہیں, اس کے پیچھے جو ایسے کیریکٹرز ہیں جو ان کو پیسے دیتے ہیں, جو یہ دہشت گرد بناتے ہیں, یعنی کہ پاکستان آرمی, ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. وہ تو ایک کو مارو گے 50 کو اور بھیج دیں گے. تو اس لیے اس بار جب جوابی کارروائی کی جائے گی تو اس میں پاکستانی ملٹری کو کوئی نقصان ہو اس کا خیال رکھا جائے گا. ایسی سوچ ایک یہاں پر ہو رہی ہے. اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ سر میں تو بولتا ہوں کہ وار از نیور گڈ فار اینی تھنگ. وار نے کبھی کوئی بھی چیز سالو نہیں کی ہے. اتنا لڑکے بھی پھر اینڈ میں وہی معاہدے ہی ہوتے ہیں اور ٹریٹیز ہی ہوتی ہے. کر رہا ہے یہ چیز اور اس چیز یہ تو سمجھ میں آپ کی دیکھیے ایک بات سے میں سہمت ہوں اور مجھے میں پسند بھی اس بات سے ہوں کہ آپ ہمارے دل میں جو آج کی تاریخ میں جو درد ہے. اور میں رمن ملک جی کو اب میں مائک پہ بلاؤں گا. رمن ملک is from the BJP, lives in Haryana. Raman, I thought of this topic because somebody just messaged me that there were some 20 crore people who were watching the IPL match today. So first and foremost, why was this IPL match being organized on a day when, it just shows insensitivity. So many government events have been cancelled, but while cricket must go on, as I say, perhaps commercialization, maybe. But the point, Raman, being made now by Mohammed, who's on our in our spaces right now, when he himself is saying that, boss, they are also stuck, then where does this lead us? What does India do? Raman. Dekhiye, I believe this is a 7th October moment re-happening. 7 اکتوبر کو جو اسرائیل میں ہوا تھا وہ آج یہاں ہوا ہے. اس کی روح, اس کا آتما, اس کی فطرت, اس کا ضمیر وہی ہے. اور میرے کو پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ جس کا ضمیر جیسا ہوتا ہے اس کو جواب ویسا ہی سمجھ میں آتا ہے. اور اس میں بہت سارے پہلو بھوپین بات کرنے کے ہیں. If you see, since yesterday after listening to this, I have not been able to sleep, honestly. Yeah. دماغ گھومتا جاتا ہے, روح کانپتی جاتی ہے کہ اس بچی کا جس کی 4 دن پہلے شادی ہوئی تھی, 19 تاریخ کو شادی ہوئی اور 22 تاریخ کو بیوہ ہو گئی, اس بیچاری کا کیا ہو رہا ہوگا دماغ, دل, اس کے ماں باپ کا کیا جا رہا ہوگا, اس بیٹے کے ماں باپ کا کیا جا رہا ہوگا,
क्या क्या ख्वाब बनाए होंगे। और मैं उसका वो लास्ट वीडियो देख रहा था, वो जो शाहरुख खान किस्म का एक एक्सपोजर सा दिया था। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस हर्ट्स एंड यस, मैडम मेरे को कहने में हर्जा नहीं है कि ये वाला जो आक्रमण है, ये वाला जो दहशतगर्दी का एक चोट है, वो बहुत सही जगह अंदर तक जाके लगी है। They have been successful in hitting us where it hurts. So you should not defy this. अब पाकिस्तान क्या कहता है या पाकिस्तान में रहने वाले क्या कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेटी हमारी बेवा हुई और करने वाले वहां से ऑर्डर लेकर आए थे, और वहां के लोग भी हो सकते हैं, वहां से प्रेरित लोग भी हो सकते हैं। क्या इंडिया सॉफ्ट स्टेट है? क्या भारत सॉफ्ट स्टेट है? मेरे ख्याल से आने वाले 10 दिन 12 दिन इसका जवाब देंगे। मेरे को तो ये लगता है कि पाकिस्तान को गाजा के बराबर बना देना ही एकमात्र सोल्यूशन है, उसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं। ये रमन भाई कैसे, रमन भाई आपने बात की कि इस तरह होना चाहिए, आई एग्री विद यू, लेकिन देखें हमारे पास भी तो हमारे भाई बहन शहीद होते हैं ना, कुलभूषण भाई भी आए थे, पकड़े गए थे, तो इसका वैसा है। देखो, आप कुलभूषण भाई को भेज नहीं, उसका हल मैं बताता हूँ ना जी, आपको हल बताता हूँ, सुनिए। हमारा आपका डिवीजन जो है, इस देश का, भारत का डिवीजन हुआ धर्म के आधार पे, और धर्म के आधार पे जब डिवीजन हुआ तो हमारी गलती जरूर है कि हमारे जो उस समय के हुक्मरान थे, उन्होंने अपनी राजनीति के चक्कर में हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे देश के ऊपर नासूर डाल के रख दिया। If the majority of Muslim wanted a division, then the division should have been absolute. आप गैंग्रीन वाले हिस्से का आधा टुकड़ा काट के रख दें और आधा वहीं छोड़ दें, तो बाकी जिस्म में भी गैंग्रीन बढ़ता है। मैं उस परिवार में से आता हूँ जिस परिवार ने अपना सब कुछ बंटवारे में खोया। रमन, मैं मिठा टोहाना से आता हूँ। आप अगर पाकिस्तान में होंगे तो आपको पता होगा, सरगोदा खुशाब में, खुशाब के अंदर मिठा टोहाना करके जगह है, उस जगह की जिम्मेदारी हमारे पास थी, हम बहुत कुछ खो के आए। रमन, मैं ये कह रहा हूँ, आपने जो बोला कि पाकिस्तान को गाजा में कन्वर्ट कर देना चाहिए, मेरे मुताबिक आज की डेट में देयर इज अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडिया व्हिच मे वांट दिस, बट लेट्स टॉक प्रैक्टिकलिटीज। हियर इज मोहम्मद, resident of Karachi, I think, if that's what his bio says, right? Resident of Pakistan, let's say, who's of this view that, people in Pakistan are also, they're struggling because of terror activities. Now, we all know, we've all tracked this Indo-Pakistan juggernaut for so long. We all know that there is a section of Pakistani establishment, Pakistani military, Pakistani intelligentsia, Pakistani political establishment, which all feels a certain way about India and certainly about Kashmir. I will say this about Pakistani friends. You can have the most logical conversation with them on most things, but the moment when you raise the question of Kashmir, there is near consensus, there is near unanimity in Kashmir, in Pakistan, that India has been unfair. Now I put that in the context of what Mohammed is saying, and the sheer anger which we are feeling today because what has happened in Pahalgam. Do you think, Raman, India today, do you think we have the political will, we have the geopolitical courage to go and do to Pakistan what Israel did to Palestine, Raman? I said we are sensible enough to act to the pain given to us in the manner and the choice of our timing, at our will, and in the way it inflicts the minimum damage to us. But yes, the political will is very clear to give back with interest everything that is given to us. You give us love, we will give you
ample love. We will give you free vaccines also. When the world was asking you for your aircraft installations, your defense installations and security, you remember Pfizer asking that to Argentina and other places. And we were giving free vaccines. Why? Because we are a peace-loving nation. But if you tinker us, we will rattle you up. So that funda is very clear. But once what you were saying is about Pakistan, people saying we are facing the same, this and that. Let's understand something. जब आवाम किसी चीज से परेशान होती है तो उसका विद्रोह करती है. हिंदुस्तान के अंदर जनता जनार्दन सड़क पे आती है, पाकिस्तान में भी आती है. जनता जनार्दन वोट देती है उस चीज के अगेंस्ट, पाकिस्तान में भी देती है. लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में फर्क क्या है? पाकिस्तान के अंदर एक शराड चल रहा है विच इज नोन एज डेमोक्रेसी, जमहूरियत. वहां जमहूरियत जो है वो जमूरा है, और उस जमूरे का उस्ताद जो है वो आर्मी है. क्या पाकिस्तान के लोगों ने आर्मी के खिलाफ बगावत करी? क्या उनसे ये पूछा कि तुम्हारे पास तो साला फार्म हाउसेस भी हैं, इंटरनेशनल चेन्स भी हैं, तुम्हारे बच्चे लग्जरी में रहते हैं, हर एक कोई जनरल कर्नल जो है साला उसका यूके में, यूरोप में कहीं ना कहीं बड़ा एस्टैब्लिशमेंट है, उसको फैक्ट्रियां मिल जाती हैं, सब कुछ मिल जाती हैं, और हमारे को गुर्बत मिलती है. क्या पाकिस्तान की आवाम उनके खिलाफ खड़ी हुई? नहीं हुई. सर मैं ये If you do not stand against the Frankenstein master, then you have no right to comment about it. नहीं सर, इसमें रुपया आपके रुपए से नीचे होता था, आज आपका रुपया जो है हमारे रुपए से 30 पैसे पे है, और वो अलबत्ता चाहा तो वो 10 पैसे पे हम ले आएंगे बहुत जल्दी. I appreciate the fact, Mohammed. I appreciate the fact that that you have chosen to come on this space, and you're in front of a very hostile, let's say, and a hurt, may I say, Indian audience, and you're getting a first-hand feel of how people from politics, from media, from the corporate setup. I will introduce you to another great businessman, Dilkhush Kumar. बहुत अच्छा उन्होंने बिहार में उन्होंने शुरू किया रोडवेज के नाम से. ही इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ दिस कैब सर्विस. दिलखुश कैसे हो? मुझे आप बताओ दिलखुश कि ये जो हुआ जो कल पहलगाम में इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये तो बहुत दुखद है भैया. सबसे पहले तो वहाँ का इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, क्योंकि टूरिज्म को लेके ही वहाँ का इकोनॉमी चल रहा था जम्मू कश्मीर का. और मुझे लगता है ना, जो सरकार के पास हम लोग जो हैं अभी जितने भी लोग इसमें कनेक्ट है, उन लोगों से ज्यादा काबिल टीम है. तो मुझे लगता है ना, जो हम लोग जितने आदमी कनेक्ट है उनसे ज्यादा काबिल लोग सरकार के तंत्र में हैं, और इसीलिए देश बहुत अच्छे तरीके से चल रही है. तो मुझे लगता है जो हम लोगों के अंदर जो एक आवेश है, गुस्सा है, क्रोध है, इसको अभी बचा के रखें. सरकार को पहले एक्शन लेने दें. हमको लगता है सरकार एक्शन लेगी, क्योंकि ये नया भारत है. जिस हिसाब से हम लोग भारत में पहले जो सोचते थे, पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है पहले इस तरह की घटना नहीं हुई है, कई बार हो चुका है. लेकिन अब हमको लगता है एज ए युवा, एज ए एंटरप्रेन्योर, मुझे लगता है मेरा जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर हम कहते हैं सरकार बहुत अच्छा एक्शन लेगी और समय पे एक्शन लेगी. हम लोगों को अभी हम लोग का धर्म बनता है सरकार के साथ खड़ा होना. हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो कांग्रेस वाले हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अभी विपत्ति के समय में हमें सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए. जब सरकार इस विपत्ति से निकल जाएगी, फिर हम सरकार पे सवाल जवाब ये चलते रहेगा. तो मुझे लगता है अभी सरकार का सपोर्ट करना चाहिए, और हमको पूरा भरोसा है इस बात का, जो ये जो घटना हुआ है इसका बदला हम लोग. मैं सीधा सवाल पूछता हूँ दिलखुश भाई. अभी देखिए, आपने कहा सरकार कदम उठाएगी, सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं. फॉर इंस्टेंस, जैसे जो इंडस वाटर ट्रीटी शेयरिंग था, अग्रीमेंट था, उसको कैंसिल कर दिया गया है. वाघा बॉर्डर बंद हो गया है. पाकिस्तानी नेशनल वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं. जितने पाकिस्तानी आर्मी के एडवाइजर से भारत ने उनको बोला गया कि एक हफ्ते के अंदर आप चले जाइए यहाँ से. ये सब जो कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक जो कदम उठा लिए गए हैं. मेरा सवाल आज कुछ और है. मेरा सवाल ये है कि जब पुलवामा में अटैक हुआ तो हमने एयर स्ट्राइक्स किया, तो हमने एक टेम्पलेट और एक प्रेसिडेंट हमने सेट कर दिया. अब जब पहलगाम में अटैक हुआ और बेचारे 26 निर्दोष सिविलियन मारे गए इस प्रकार से, तो क्या हमें जो हमने एयर स्ट्राइक पिछली बार किया था, क्या हम उसके और ऊपर जा सकते हैं? क्या हमें करना? बिल्कुल ऊपर जा सकते हैं.
बिल्कुल ऊपर जा सकता है। और कश्मीर के लोगों को ये सोचना चाहिए, जो कश्मीर का जो इकोनॉमी है कंप्लीट टूरिज्म पे है, अगर वो आज हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, भारतीय के साथ नहीं खड़ा हुआ, सरकार के साथ नहीं खड़ा हुआ, तो भूखे मर जाएगा। तो अगर कश्मीरी को लगता है जो नहीं हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, तो आज उसको सरकार के साथ खड़ा होना होगा, चुन चुन के निकालना होगा सबको अपने घर से, जिसको जिसको छुपा के रखा है। बिना लोकल सपोर्ट के 4 आदमी हथियार लेके नहीं घुस के वहां रह सकता था। लोकल सपोर्ट कहीं ना कहीं उसको मिला है। तो सही कतार बात तो है। हमारे अपने ही हैं। आपने बात आपने बहुत पते की कही आपने। एक और हमारे साथी जुड़े हुए हैं, फैज दीजू जी हैं, बाय द नेम ऑफ एफडी। फैज, यू वांटेड टू मेक अ पॉइंट, फैज, गो अहेड। थैंक यू वेरी मच भूपेंद्र जी, आपने बात करने का मौका दिया। आई एम वेरी हम्बल्ड। मैं पहले ये जो भाईजान अभी बात कर रहे थे, आई जस्ट wanted to respond to him and tell him one very simple thing. First of all, every Kashmiri, and I am telling you with complete conviction, every Kashmiri is mourning at this point of a time. ये जो अटैक हुआ है भूपेंद्र जी, ये अटैक 28 इंडिविजुअल्स पे नहीं हुआ, ये 28 फैमिलीज पे नहीं हुआ, ये अटैक जो हुआ है ये कश्मीर के 13.5 मिलियन लोगों पे हुआ है। और ये जो 13.5 मिलियन लोग हैं कश्मीर के, 1 करोड़ 30 लाख की जो आबादी है, ये जो अटैक है ये हमारी बर्दाश्त की चरम सीमा पार कर चुका है सर। ये अटैक हिंदुस्तान के 1.545 बिलियन जो आबादी है, ये उन पे अटैक हुआ है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। आप बात करते हैं जी कश्मीरी है ये बाहर निकलेंगे, सर मैं आपको बोलूंगा आज, at the same time when I am anguished, at the same time when I am angry, but at the same time I felt a sigh of relief when I saw everybody I know, whether it is from business community, whether it is a community from hoteliers, whether it is shopkeepers, traders, aap jiska naam lo, everybody was out today protesting. For what? Against this terror, because we don't want this, sir. We have seen enough in the past. We have seen violence, we have seen bloodshed. I am 38 years old. मेरा जो प्राइम यूथ था सर, वो घरों के अंदर था. My parents didn't allow me to go out. क्यों? Because हालात बाहर खराब हैं. सर अब मेरी आगे आने वाली जनरेशन है, कल मेरे बच्चे होंगे. I don't want them to see the same Kashmir, sir. हम बदलता हुआ कश्मीर देखना चाहते हैं, एक अमन का कश्मीर देखना चाहते हैं, एक पीसफुल कश्मीर देखना चाहते हैं. सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस जहां पे एक इनोसेंट लाइफ, चाहे वो एक बंदा क्यों ना हो, हम 28 की बात करते हैं, मैं एक बंदे की भी बात करता हूं. Why would even one innocent blood be spilled? We are totally against this, sir. अभी मीडिया में जो चल रहा है, can I ask you, Faiz, let me ask you one question. Please. आज ने एक वीडियो भी चल रहा था of the Jammu and Kashmir Lieutenant Governor, जो मनोज सिन्हा जी हैं, where he was making an open call. He was telling people of Kashmir that look, जो पड़ोसी मुल्क जो कर रहा है उससे तो हम निपट लेंगे, लेकिन हमारे घर के अंदर, and it was a straight reference to Kashmir in Srinagar, and it has been a view for a very long time that there is a section of Srinagar in Kashmir which is pro-Pakistan, which enables this local support. जो दिलखुशी जी उसकी बात कर रहे थे कि local support के बिना ये terror attack possible नहीं है. How do you deal with that local support question, Faiz? देखिए जी भूपेंद्र जी, सबसे पहली बात जो हमने ये एक टर्म बना के रखी और इसको डेवलप किया है, अननोन गनमैन, नो, दिस इज बुलशिट. देयर इज नो अननोन गनमैन. दिस गनमैन इज नोन एंड इट हैज बीन नोन फॉर क्वाइट सम टाइम. एंड यस, एज यू सेड, ये हमारे पड़ोसी मुल्क है. दिस इज अ स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एंड दिस अटैक, ये एक इट इज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. इट इज आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन कि क्या ये वही कश्मीर है जो एक टाइम पे पाकिस्तान जिंदाबाद करता था. ये तो आज पाकिस्तान को भूल गए, इनको तो आज पाकिस्तान का नाम भी याद नहीं है. ये तो पाकिस्तान हाय हाय कर रहे हैं. और वो आज आपने देखा होगा, आज जो यहाँ पे मुजाहिरे हुए हैं, आज जो यहाँ पे कड़ी निंदा हुई है, जो मजम्मत हुई है, उसमें पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगे. बिकॉज पीपल डोंट वांट दिस नॉनसेंस, पीपल डोंट वांट दिस स्पॉन्सर्ड टेररिज्म व्हिच इज कमिंग फ्रॉम अक्रॉस. अब आपने बात की यहाँ पे लोकल हेल्प की. सर देखिए, लेट अस कॉल स्पेड अ स्पेड.
हो सकता है आपकी बात में कुछ सच्चाई हो, बट आई एम टेलिंग यू whether it is somebody from this side of the fence or whether it is somebody from that side of the fence, जो भी हाथ उठता है और ये बंदूक चलाता है, सर मेरे बस में हो मैं जाके वो हाथ काट दूं, फिर चाहे वो हाथ इधर का हो या हाथ उधर का हो. But just because there is a bunch of people who choose the sides, you cannot paint every Kashmiri with the same brush. हमारे ये जो अटैक है सर, ये हमारी आइडेंटिटी पे है. कश्मीर वॉज ऑलवेज फेमस फॉर इट्स वार्मथ एंड फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी. जो आज हुआ है ना सर, इससे हम सब कश्मीरियों का, हम सब का सर शर्मिंदा हो गया है और शर्मिंदगी से नीचे झुक गया है. बिकॉज हम किसको बोलेंगे कि हमारी हॉस्पिटैलिटी और हमारी वार्मथ? भूपिंदर जी मेरे को पलट के बोलेंगे तुम किस वार्मथ की बात कर रहे हो, तुम किस हॉस्पिटैलिटी की बात करते हो, 28 लोग तो तुमने मार दिए. भूपिंदर जी वहां पे गलत नहीं है, बट देन भूपिंदर जी हैज टू लुक कि क्या ये सही है कि कुछ लोगों के ऐसे नाजायज काम करने से ये हर कश्मीरी को इस तरीके के से पेंट करेंगे? आर यू नॉट पुटिंग एवरी कश्मीरी एट रिस्क हु इज लिविंग आउटसाइड कश्मीर? हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं, कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज में है, हॉस्टल्स में रहते हैं, क्या ये मीडिया में ये नैरेटिव फैलाने से क्या हम उन बच्चों को रिस्क में नहीं डालते हैं? I know a lot of you have a lot of points to make. मैं आ रहा हूँ सबके पास, लेकिन फैज मैं आपसे इस चीज को सेटल करना चाहता हूँ. मैं क्या ये सच नहीं कि त्राल में, साउथ कश्मीर में भाई ऐसे कितने, मतलब हम लोगों ने अपने रिपोर्टिंग करियर में हमने ऐसे कितने वाकये हमने देखे हैं जहां पर लोकल जो पॉपुलेशन है वो लोकल पॉपुलेशन हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाती है. तो क्या आप ये कह रहे हैं कि वो लोकल पॉपुलेशन आज के अपने माइनॉरिटी में हो चुकी है तो हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाती है? फैज क्या है ही नहीं आपके मुताबिक? ओके, एक टाइम पे हो सकता है ये हकीकत थी कि लोग प्रो पाकिस्तान थे, लोग एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे, लोग एंटी इंडिया थे. सर आज के टाइम पे एक एवरेज आम कॉमन कश्मीरी वो सिर्फ अपना काम करना चाहता है, अपनी जिंदगी सुख शांति से गुजारना चाहता है, अपने 10 पैसे कमाना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है, अपना रोजगार चलाना चाहता है और उसको पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है. एंड अगेन आई विल रिपीट सर, आई विल रिक्वेस्ट यू, अगर आप थोड़ा सोशल मीडिया स्क्रॉल करें, अगर कुछ कश्मीर के जो ट्विटर हैंडल्स हैं अगर उनको देखें, आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा कि वाकई में वो जो लोग हैं, वो जो कम्युनिटी थी या वो जो बंच ऑफ पीपल थे जो प्रो पाकिस्तान करते थे, वो आज सर गिने चुने लोग बचे हुए हैं. आप मानने को तैयार हैं फैज की बात को कि भाई जो लोकल आम कश्मीरी है वो एकदम भारत के साथ है, उसको कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान से, वो भूल चुका है पाकिस्तान को, दिल खुश. भूपेंद्र सर बस ये पूछिए कि बाकी राजस्थान और गुजरात में ऐसे अटैक क्यों नहीं होते? हाँ, आई वाज कमिंग टू यू सर. नेक्स्ट इज योर टर्न कर्नल, क्या आप बताएं. आई वाज ट्राइंग टू गो टू दिलखुश, बट शायद वो मेरी आवाज सुन पा रहे, लेकिन आप बताएं ये जो अभी तक प्रीवियस स्पीकर से यही पूछना चाहता था कि अगर ये बात है इतने कम हो गए एंड इफ थिंग्स आर सो अंकित होती तो फिर राजस्थान और गुजरात में भी ऐसे अटैक्स हो सकते हैं, वहां तो कभी हुए नहीं, कश्मीर में ही क्यों होते हैं? आपने तो कश्मीर में सर्व किया हुआ है कर्नल साहब, आप मुझे बताएं कि आपके मुताबिक क्या हुआ है. ये आउट ऑफ माई एंटायर 24 years ऑफ सर्विस, मैं 18 साल जो है ऑलमोस्ट नियर अबाउट, ओके इन बिटवीन ब्रेक्स भी हैं, बट 18 साल के करीब, तो 16 से 18 साल आई सर्व्ड ऑन, आई हैड बीन ए कंपनी कमांडर इन द राष्ट्रीय राइफल्स, सर्व्ड इन गढ़, किश्तवाड़ और उसके बाद देन कुपवाड़ा, लोलाब में ऑपरेशंस किए हुए हैं, पुंछ राजौरी में ऑपरेशंस किए हुए हैं. In a nutshell, this is my, and also during Op Parakram, I was somewhere in that Samba sector. So this is in nutshell my experience of entire J&K. तो कोई ऐसा इलाका है जो बच गया हो? I don't know. I had been to Anantnag, I had been to Pahalgam also. मैंने एक कोर्स भी किया हुआ है हॉर्स में, जो कि एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमने काफी सारे एरियाज का रेकी भी किया हुआ है, नए रूट्स वगैरह तलाशने के लिए. नाउ हैविंग इंटरैक्टेड एक्सटेंसिवली विद कश्मीर, आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट द सिचुएशन इज. प्लस और माइनस 2%, उससे ज्यादा कोई चेंज नहीं हुआ होगा. But of course, after 2017, I had no further contact with Kashmir. So my knowledge is up to what was happening till
2017 Jan. Okay, so please bear this in mind. No, sure. Now the point is that there is a situation there which is unique to Kashmir. Unique to Kashmir in the sense that there is a certain amount of inherent radicalization already existing in the society, which actually sees people who are non-Muslims as some kind of an intruders or something. Okay, they do not actually believe in whatever are the actual historical evidences that are and the ruins of the temples that are there in Kashmir and all. They will say that it is all part of Jahiliyat. After the advent of Islam, Kashmir is an Islamic territory. So it is basically Darul, Harb. So now, basically, everybody likes this idea, is fascinated by this idea. Just like we are fascinated by Bollywood, they are fascinated by this idea of caliphate. Koi caliph hoga, there will be an Islamic rule, there would be this, that. Now, this doesn't fit into the exact nature of how the things are in the world today. But now, bulk of the population, they also know heart of heart that this is not possible now and that this doesn't fit the narrative. Tomorrow morning, I have to go and get bread for my children and I have to make an honest living. So they seek whatever is positive in their religion. Okay, and they go by that. They are peaceful people. They are friendly with everyone. They are even friendly with forces. And they are the idealist kind of a Muslims, which I would say. But there are some who repeatedly, they just don't stay in Kashmir. I have caught a few of them. At our point of time, there were no clear-cut orders as to what to be done with them. These guys would go to some place 6 महीने के लिए 3 महीने के लिए गायब हो जाते थे, फिर वापस किसी रास्ते में मिल जाते थे, कोई चौकी पे पकड़े जाते थे. पूछो इनसे तो डीब्रीफिंग में कहते थे कि हम उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं. Then after further debriefing them, they would say कि हम तो यहाँ उत्तर प्रदेश में we had been to these seminaries basically, जो हैं अपने पुरका जी के पास, the very well-known seminaries. My friend Faiz would be knowing about it. वहाँ पर जाओ. Now those places, those are the places which indoctrinate people left, right, and center. They indoctrinate some of the Kashmiris also. Now they bring out the most radical form of Islam, and then from there they go on to these mosques, and then they'll preach. There are people who caution against it also. There are people who don't go to mosque, and there are people who try to check them also. But at the same time, it's a tussle between both of them. There are no clear victors. But those who say that, those who believe that anyone who is a non-Muslim, he is wajibul qatl. He is looked upon as a hero. 40 तो मेरे सामने निकले हुए हैं through various gaps and into India. Where did they all go? We charted out their routes. Where all they settled, what happened to them, God knows. But it was impossible for us to stop at that particular point of time. Slowly and slowly the gaps were filled. It took some time. The grid has to be established. The counter-terror grid established hote, it was almost 2002, 2003. 2003, I was in the Rashtriya Rifles. And 2003, we were actually seeking them and destroying them. Literally in the areas of Doda, Gulabgarh, Kishtwar, and Basoli, and this Kotranka areas, and Pauni, Riasi areas. Now, these are the places where we used to act. Even then, we were very, very thinly stretched. In fact, imagine me, a company with around 200 boys, trying to operate and dominate an area which is almost 30 kilometers by 30 kilometers. And that too in those hills. Of map pe. So it is like from one end to the other, you will take 7 days to reach by walk. And there are no roads.
Of course, we did that based on int. कि कहाँ पर क्या होगा. कई बार there used to be literal fights between some of these so-called ROI agents and not ROI agents, IB agents, so whichever agents the government provided, and our own boys, because they used to say कि ये घुटना parade कराते. When you go there, nothing is to be found. Yeah. So it was a tough time, and it some time for the situation to settle down. But what happened to this radicalization? If somebody is saying that it has just disappeared in air, That's not then I possible. just don't buy it. I just don't buy it yet. You know what we'll It do, just can't disappear. Colonel, if I may just ask you to just hold on, because I'm seeing a lot Yeah. of our friends from the Valley who obviously word has gotten out that I'm hosting this broadcast, and I'd be more than happy, to listen to whatever is the actual viewpoint Sure. on the ground. Let me come back to you, Raman. You wanted to make a point. I have just, posted on top 2 tweets of mine. So initially when we started the conversation, Bhupen, we only were talking about the external part of it. Yes. And then there are multiple facets to this whole problem, and which needs to be discussed. Yes, security lapse is an issue which needs to be discussed, but what was the LIU doing? Who are the members of the LIU? What are the things happening? Those again would raise a lot of multiple questions. And I've been very brutally speaking on it since yesterday. Now, let's understand the first that you see, and that is that yes, I think, and hats off to a lot of Kashmiris who have actually come out in a very beautiful manner to cancel the narrative that there is actually some amount of support to these terror freakouts, to the people who believe in terror, and they have been given logistical support, they have been given support. It cannot be done without the support. And to negate that, all the exercises of visual candle marches and everything, and they're doing it beautifully. One must give it to them. And this is a concentrated effort. How it has been done, I do not know. But it is a beautiful effort. If you really want to listen how it happened today, we have the man behind this. His name is Mr. Akib Chaya, and he's in the listener mode. If you want, Where is he? Can you ask him to send me a request, and I'd be more than happy to. Sure. Who's the person you said? Akib. Akib I don't see Chaya, him. yes. आप उनको बोल दें, अगर आकिब जी को मैं नहीं देख रहा, आप उनको बोल दें मुझे रिक्वेस्ट भेज दें. I'll take him up right away. जी. Bhupen, the important question which needs to be answered by every person who is basically a Kashmiri is, because you see, you have to understand that the idea of this kind of an activity is not a first one, because the same neighbors who were there with Kashmiri Pandits 40 years back killed them. And after that, this incident happens. I do not say everybody from Kashmir is involved, but there are people involved. And those people must be identified by the local people themselves, and the black sheeps should be brought to justice by the locals if their bona fide is there to progress. But if their bona fide is not there to progress, and their bona fide is to be a covert supporter of the Muhim or the jihad, then yes, dharma rakshati rakshata. That should not be forgotten. No, of course. And yes, also understand, and very clearly, Kashmir is a land of Kashyaps. ऋषि कश्यप के वंशजों की है. वो ऋषि कश्यप जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी आए, जिससे नागास भी आए, जिससे राक्षसा भी आए, सारे. So we can live peacefully, but reclamation again is not a problem for those who have a clear heart to live peacefully. Okay. Now the time is to stand clear and call spade a spade. I think You will have to prove it. If I am allowed, Ramanji, Yes. can I just speak for 30 seconds? please. Ramanji, पहली बात एक मेरी humble request है आपसे. Let's not abuse this word jihad, because ये जो हुआ ये jihad नहीं है, ये आतंकवाद है और ये आतंकवादियों का काम है. Jihad is
Totally a different thing. I don't even want to go there. ये जो कल हुआ है Sir, इन sir, innocent लोगों के jihad साथ, is fighting the evil within. But apparently, this evil which lives within the community, where terrorism is protected by not exposing it, is a problem. And jihad has been branded by not you or by not the common person, but the people who are running the society. They have named jihad as a war against humanity. Okay, let's listen to Faiz. So that boja you will have to carry. Faiz. बताएं Faiz. Sir, what boja are you talking about? And again, when you say community and society, no, sir, no. इससे पहले अभी हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब भी बात कर रहे थे. First of all, huge respect for him. He has served here in Kashmir. My salute to him. He said कि इनने बहुत पहले यहाँ serve किया है, probably in 90s, और तब से लेकर आज तक he doesn't have much connect with Kashmir. So with all my respect and regards to him, I just want to tell him, sir, 90s में जो कश्मीर था और आज हम 2025 में बैठे हैं. 2017 तक सर. Sorry, sir. 2017 2017 It was 2017. Even then, sir, I am telling you, and मैं बड़ी authority से आपको कह रहा हूँ और बड़े वसूख से आपको कह रहा हूँ, 2017 के कश्मीर में और 2025 के कश्मीर में आसमान जमीन का फर्क है, सर. बहुत सा डिफरेंस है उस कश्मीर में और इस कश्मीर में. This is a better Kashmir, and we want to make it better every day. But the incidents and attacks like these, they take us 10 steps back, and we don't want to go back, sir. Because हमने Okay, I think जब आप आकिब की बात कर रहे थे, आकिब चाहे की, I think okay, Akib is I'll let him speak. Yeah, let me understand from him, and then I'll go to Dr. Dheeraj and Apurva. Yes, Akib bhai, आप बताएं मुझे. देखिए, you know, there is a certain view, and a lot of people here, Akib, are of that view, and it's a view which has been echoed by none less than Manoj Sinha, the Lieutenant Governor of the state of Jammu and Kashmir as well. Which is that this terror strike could not have happened without some local support, and therefore it is leading to a huge question mark. Okay, do we know the real Kashmiri identity? As much as we may all love Kashmir and we may have great friends in Kashmir, but do we know the real Kashmiri identity? Okay, I think that's the question which can really settle, a lot of questions which we've been adding. Akib. Akib is speaking. Akib Chaya. Yes, sir. You can unmute your mic, Akib. Yes, hi, Bhupinder ji. Hi. I heard the other listeners, and everyone is really, really angry, and one should be so. And so are the people of Kashmir. Lieutenant Colonel R.K. Sir, huge respect for you. You've served in the Kashmir Valley, and rightly said, sir, till 2017, the situations in Jammu and Kashmir were very different from what they have been in the last couple of years. Peace and development and the whole ideology of Kashmiri people has changed in the last couple of years. I do not know the reason. I am amongst those people who had to flee in the 90s because I was seen as a hardcore Indian. At that point of time, my family was seen as an Indian, and I too had to flee. But sir, with utmost authority, I would like to tell everyone that the entire Kashmir Valley is mourning today's gruesome act that took place yesterday. And let me call a spade a spade. It was a Hindu massacre. People were identified on basis of the religion. They were separated and they were killed. There are no two questions about it. This has been done because of the fact that I don't even want to call them neighbors. They are unhappy with what Kashmir has become, what Kashmiris have become. The last couple of years, the central government, the LG administration has done a commendable job in turning the entire valley, a valley that was ridden with turbulence and volatility, into peace. Youth like me, we have changed, sir. The entire Kashmir was shut today. Organizations that have nothing to do with tourism had called for a shut call today. They were at the Lal Chowk Ghantaghar condemning this, and we are as angry as the rest of the country because we are Indians at the end of it. It is an attack on our country, and it is an attack on Kashmir in specific.
because these people have not learned a lesson. This is not a terrorist attack. This is a massacre, and this is I compare it to the 26/11 attack that took place. We are looking for the same retaliation from the central government, and I'm very sure they will do that. Yes, also we need to have acceptance. There might be local support, but please don't overshadow that the work that has been done in the last couple of years in the valley and the ideologies that have shifted. People coming out with flags and everything. This is what these terrorists, these animals that did this. This is what these animals want. They want to dilute this secular fabric of this, that want to disrupt this peace process and development process that has been achieved in the last couple of years. We as a society should not succumb to this strategy of our so-called neighbor. We should not. And I am in full agreement with Faiz. The Kashmir Valley has totally changed, sir. After you have served in 2007. I can see, Aqib, I can see that I think you're also part of the Kashmir Young Entrepreneurs Forum. So we may have run into each other also at some stage. I can see that, Kashmir may well have been reclaiming its position as a tourism hotspot, and therefore I'll be honest, I myself was planning to come to Srinagar in the month of May during summer vacation, and I've cancelled my plan. And I know a lot of people who've done that because people are not feeling comfortable today. But I just want to go to Dr. Dheeraj for a moment because he's been standing by for a while. Bhupendra, before you go, please also ask the panel, the people who come on the panel, about, especially ones who are coming from Kashmir area, what is their comment and understanding of the comments given by the member parliament of Srinagar, that rascal of a person who gave those comments? What is their standing on that? Would they like to put let's say a application to the speaker of the Lok Sabha asking to remove him? Arey yaar, Raman, please be sharp, not direct. Aqib, this video which has been doing the rounds. Which comment are you talking about? There is a National Conference MP. He believes in an interview जो उन्होंने कुछ time पहले दिया था. In that interview, he is saying that all this tourism is cultural invasion of Kashmir. And therefore this is, he's taking an anti-BJP, anti-Modi, anti-India, so to say. Sir, I totally protest against that statement. There is no cultural invasion. We're all Indians at the end of it. If any Kashmiri is in Delhi or in Punjab or in Gujarat or Kanyakumari, how is it a cultural invasion? This country is very vast. And we are all citizens of this country. So this is whatever that MP has said. I strongly protest that statement. It's a stupid statement that he has made.